कॉर्पोरेट रडार में आज आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे टाटा मोटर्स पर और टाटा मोटर्स के जो नंबर्स आए कंसोलिडेटेड बेसिस ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स हैं। मैं क्विकली नंबर्स बता दूं। Q4 FY22 वर्सेस Q4 FY21 में रेवेन्यू इज डाउन अबाउट 11.5%, एबिटा 30% नीचे है, मार्जिन भी 11% आया है जो एस्टिमेट से स्लाइटली कम है, एंड कंपनीज रजिस्टर्ड लॉस ऑफ 1100 crores वर्सेस जो हम प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे थे। एक्सेप्शनल लॉस रहा है 714 crores का, बट चलते हैं ज्यादा डिटेल में नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मिस्टर पीबी बालाजी, ग्रुप CFO एट टाटा मोटर्स जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो सर नंबर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े से लो आए नंबर्स, व्हाट हैज बीन द मेजर फैक्टर्स? Thank you. Thanks, Swati, for having me on the show. Two major challenges as far as the quarter is concerned. पहले जो है, जो सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी जो इम्प्रूवमेंट हमने प्लान किया था उसके हिसाब से थोड़ा कम है, इम्प्रूविंग बट डेफिनेटली लोअर देन व्हाट वी प्लान, पर्टिकुलरली JLR में। और सेकेंड है जो कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है उसका हेडविंड्स अभी भी चल रहा है। वी आर एट दिस पॉइंट इन टाइम एटलीस्ट अबाउट 200 बिप्स का margin is not being recovered from pricing. These are the two headwinds that is there, but a lot of positives in terms of what we see. पहला जो है, जो JLR का intrinsic resilience है, जो break even से that have come down, we are able to manage it pretty tightly. JLR का नंबर में एक और नंबर का इम्पैक्ट हुआ है, जो रेंज रोवर्स जो लॉन्च हुआ है, पुराना रेंज रोवर बंद होएगा, नया रेंज रोवर स्टार्ट होता है। नॉर्मली व्हेन दैट काइंड ऑफ अ कट ओवर, there is always a challenge in terms of delivery of revenue and profit. So that is an additional factor. But the good part is order book jo hai very strong at 168,000 units in JLR. And domestic Tata Motors dekhte hain to there is a strong pickup in commercial vehicles across all segments. And secondly, with passenger vehicles, the business has improved share, improved profitability, is now EBIT break even, PBT break even, cash break even. And commercial vehicles are increasing market shares. सभी segment में market share हमारा improve हो रहा है और profitability का भी improvement दिख रहा है. So barring ये दो issues जो है semiconductor और commodity inflation, बाकी सब intrinsic जो business fundamentals है वो अच्छी कर रही है, and competitiveness overall is also improving as well. So those are the things that we are quite satisfied with. Okay, sure sir. So of course JLR की improvement अच्छी है, JLR margin भी हमने देखा improve हुआ है despite lower sales. बट नया मॉडल आपने कहा वो रिप्लेस हुआ है, सो क्लियरली गुड प्रोडक्ट ऑफेंसिव इज वर्किंग आउट फॉर JLR एटलीस्ट। सर ओवरऑल JLR अर्निंग्स कितनी एक्सपेक्ट करें हिट बिकॉज ऑफ कोविड इशू इन चाइना और यूक्रेन रशिया इश्यूज की वजह से भी आप कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सटर्नल बिजनेस या एक्सपोर्ट बिजनेस या JLR बिजनेस पर्टिकुलरली? कोविड जो अभी चाइना में चल रहा है उसका लॉकडाउन्स हैव definitely impacted April GDP growth of China, negative 11% है अभी जो नंबर जो आया है, और उसकी हिसाब तो एक क्वार्टर पड़ेगा, इसलिए तो हमने उसको कॉल आउट किया, saying that इसका implications if it is continues this way can have it could go negative, it's possible. But जो हमने JLR टीम जो चाइना में उनसे बात जो किया है, clearly the government is now relaxing stuff from end of this weekend. And thereafter, unka focus is only going to be specific, tight, where there is significant COVID cases are the only places where they're going to put the lockdowns. Baki of country mein relaxations are actually starting off. That should actually help everybody going forward. As far as the year itself is concerned, JLR mein 5% plus ka EBIT ka guidance humne plan kiya hai. And if you leave Q1 out and then thereafter we see a sequential improvement, we're quite confident वो 5% और 1 billion cash flows जो plan करने वो numbers that we will be able to deliver. We don't see a concern. Okay. We do expect semiconductors to pick up. As far as Russia, Ukraine जो है supplies में उतना खास असर नहीं है अभी तक, because there's just two suppliers there. We are comfortable they are being rerouted. और जो main point is in terms of inflation, crude है, precious metals है, and overall food inflation, then weaving that into Fed starting to raise interest rates. And that arc is something that we need to watch out. But in JLR, I'm less worried about it because JLR ka demand jo hai 168,000 units on premium luxury. There's no trouble with respect to that. I don't expect interest rates to impact that. Domestically, so far, GDP growth has been strong
And domestic, I don't see an immediate issue. We are cautiously optimistic that demand or inflation demand continue to will be strong, and inflation expectation should be brought down, which is actually good for everybody in the long run. So broadly, I'm cautiously optimistic on India as well. श्योर सर. टाटा मोटर्स में देख रही हूँ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया है, 30% बढ़ा दिया, 32,000 करोड़ जो FY23 में किया है वर्सेस 23,000 करोड़. एग्जैक्टली एलोकेट कहाँ होंगे सर? जो एडिशनल अमाउंट है कहाँ पर एलोकेशन होगा? इफ यू कैन ब्रेक दैट अप फॉर अस. See, JL out of the 32,000 crores, 2.6 billion pounds, यानी कि 26,000 crores, 26,000 crore JLR में है. And that is broadly in line with the plan they've indicated. 2.5 billion, 100 million इधर उधर होता ही रहता है. So 2.5 billion, 2.6 billion is what JLR में invest होगा. Remaining 6,000 crores is in Tata Motors. In that, commercial vehicles or passenger vehicles will fund themselves because they are both cash accretive businesses now. And in commercial vehicles, the demand coming back, we'll be able to fund it. The only additional investment we are making, which is significant, will be in electric vehicles. उसके लिए तो हमने TPG deal इसलिए तो किया था, so that we are able to bring that money in earlier. We want to drive the penetration of electric vehicles from 7.5% to 25%. We are already at 7.5%. उसको 25% करना है, एंड फॉर विच 10 न्यू प्रोडक्ट लेना है. एक और प्लेटफॉर्म जो हमने अभी लॉन्च किया, उसका वो नया प्लेटफॉर्म फुल बैटरी इलेक्ट्रिक में आ रहा है. और कर्व जो हमने लॉन्च किया, दैट इज नाउ कमिंग इनटू द Gen 2 प्लेटफॉर्म, वेयर इट इज मिक्स फ्यूल प्लेटफॉर्म्स. So उसके लिए भी investments are going in. So electric will be the thrust of the investment that is now, which is not funded internally. It is actually funded from external investments that are coming in. बाकी सब internal fund flow से आएगा. ओके, सो ईवी प्ले यहाँ पर ज्यादा फोकस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आप बता रहे हैं वहां जाएगा. क्विकली सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की बात की, प्लेटफॉर्म्स की बात की, बट प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कैसी दिख रही है, स्पेशली इन ईवी इन FY23? ऑलरेडी पीवी सेगमेंट में बढ़िया डिमांड देखी गई है, 62% ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ सर, डिस्पाइट द सप्लाई चेन इश्यूज. तो आगे किस तरीके का ट्रेजेक्टरी रहेगी पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल? वहां पर भी हमने देखी अच्छी खासी 30% की ग्रोथ. सो दोनों का ब्रेकअप अगर आप बताएं. Yeah, so in passenger vehicles, EV demand will remain robust, and uska demand will be led out of new products as well as supply constraints being debottlenecked. Uska jo hai will be very strong this year, and focus is to ensure that we debottleneck the supply chain. Battery packs और लेना है, जो गाड़ी हमने लॉन्च किया है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वही फोकस है EV में. And how much it will go, it is completely dependent on supplies, because demand is way ahead of what our ability to supply before Nexon Max being launched. Now Nexon Max has just been launched, so that will also step up and accelerate the demand. So we are comfortable there. As far as PV is concerned, here again it's a capacity constraint scenario. अभी हमारा waiting period है almost 8 weeks है, and we are seeing demand across the board, and the CNG has only accelerated the demand even further. So we don't see a concern with respect to demand. उसमें again semiconductor ability to supply, capacity debottleneck, that will be the focus area for us, at least for the immediate future. What will happen the second half of this year? Will there be any concerns on demand? We don't see any worries at this point in time, and let us not worry about things that could possibly happen. We'll deal with it when it comes. We don't see a concern there. On commercial vehicles, I think the investments जो government कर रही है in infrastructure and the GDP growth we are seeing, I think it's going to be a very, very strong story on commercial vehicles this year. And the good news, across the board growth dikh raha hai. Earlier, passenger buses was a big problem, and that is now back again because buses, schools open ho rahi hai, offices open ho rahi hai, so that is again coming back. In that, the EV is another big game that is coming up. Jo CESL tender abhi khula hai, that's another big one there. So electrification of the last mile, electrification of the buses is another big theme that is going to start off here, along with the work that's already happening on medium and heavy tippers, all that segment. So commercial vehicle में growth का अभी कोई challenge नहीं दिख रहा है. Obviously, we have to watch out for fuel price increase, for interest rate increases. All that are the worries that are there. But फिलहाल तो उसमें अभी I'm cautiously optimistic that we should be able to balance both. सर चिप शॉर्टेज जो प्रॉब्लम आपने बताई शुरू में, दैट स्टिल कंटिन्यूज. बाय व्हेन डू यू थिंक सर ये रिजॉल्व टू गुड एक्सटेंट हो जाएगी? बीच में ठीक होने लगा था, वापस कंसर्न्स आए तो चीजें वापस have been derailed. Yeah, you have to split it on 3 levels. There is the original chip crisis that are there. Then there is the Russia-Ukraine conflict related any concern on chips, which is actually to a very small extent.
and then that leaves COVID in China lockdown. The new news is COVID lockdowns, which is there, which is actually temporary and that should come back again. It's not like there's anything structurally wrong in China. So it's just that has to be taken care of. The original chip situation is continuing to improve because new capacities are coming on board. At the same time, there's also a question about, OEMs, everybody is working towards reducing chip intensity, figuring out ways to actually manage better. So that is gradually improving. उसमें एक ही problem है, उसका slope of the curve जो है, which we are expecting to be sharper, वो नहीं आ रहा है. It's coming more gradually. So that is the only disappointment with respect to the recovery of semiconductors, but it is improving nevertheless. Since हमारा break-even 300,000 units में बैठा है, and last year we almost sold 300,000 units. So any volume that comes, and the worst is behind us, any volume that comes will actually be a tailwind for us. So that is how we are seeing the whole situation. Absolute, when will the chip problem solve itself is anybody's guess. I'm more looking at it sequentially. Fair enough, and that's a fair point. Thank you so much, P. Balaji, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे और आगे किस तरीके का आउटलुक है हमारे पास.